Indian general elections are just around the corner, and there is this one particular segment of our country, the prestigious, well educated millennials and Gen Zs, who are currently working in tier 1 cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad. I'm also one of them. And we don't really care about elections that much. So in this video, I'm going to make some arguments to make a statement that this is wrong and to some extent even foolish and dangerous. भाई पहली बात तो मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ. मुझे आई थिंक अभी 2 साल ही हुए हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इम्पैक्ट को समझते हुए. बट इन 2 सालों में मेरा लाइफ व्यू पूरा चेंज हो गया है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर 2 मेजर रियलाइजेशंस विद यू गाइज टू मेक माई केस हियर. नंबर 1, मुझे मेरा नैरो वर्ल्ड व्यू दिखा. सो आई एम अ प्राउड साइंस स्टूडेंट. मैं एक इंजीनियर हूँ एंड आई वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सप्लेन्ड हाउ द मटीरियल थिंग्स वर्क and biology explained how we humans we work and how the life works. But when I studied the impact of real life forces, practical forces like judiciary, police, banks, international relations, government, my mind was blown. थोड़ी सी अपने ईगो को ठेस भी लगी और मुझे मेरी अपनी औकात दिखी कि I don't really know much about the world. So this was number 1. Realization number 2, भाई गवर्नमेंट सबकी बाप है. थिंक स्कूल एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका जो होस्ट है गणेश प्रसाद, उसने बहुत अच्छी वे में एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी कैन सी द गवर्नमेंट. ही सेड द गवर्नमेंट इज लाइक द गॉड फादर ऑफ मार्केट. लाइक इन द मूवी गॉड फादर, नो मैटर हाउ बिग यू आर, इफ द गॉड फादर डज नॉट लाइक you will not survive. But on the other side, no matter how small you are, if you know how the great Godfather thinks, you will progress. For example, Putin started this military operation on Ukraine. Due to this war, now Europe and America, they both faced high inflation. They started spending more on their needs and less on their wants or desires. And we Indians, we were impacted because we are the producers of IT services to these 2 parts of the world. So our jobs were lost because IT services की demand कम हो गई. Second, बेंगलोर में जो फंडिंग आती है वो ज़्यादातर बाहर से ही आती है. जब बाहर ही पैसा नहीं है, जब मार्केट ही डाउन है, तो बैंगलोर में भी फंडिंग नहीं आएगी. फंडिंग नहीं आएगी तो देर आर नो न्यू जॉब्स. आईआईटी के लौंडे भी खाली बैठे हैं घर पे. कंप्यूटर इंजीनियर्स, दे आर सिटिंग एट होम. नाउ लेट मी एक्सप्लेन माय आर्गुमेंट्स फॉर द स्टेटमेंट दैट आवर एपैथी टुवर्ड्स इलेक्शन इज फूलिश एंड डेंजरस. लेट्स टैकल देम वन बाय वन. फूलिशनेस. वी ऑल स्टडीड आवर asses off for a dream that we will land a good job, we will enjoy some time with our friends, we will have a romantic relationship, we will travel the world, we will spend time with our loved ones, we will relax and watch movies. अभी पैसे कमाने वाला काम तो हो रहा है, but all the other things, जितनी भी मस्ती की बातें हुई थी, all of them is not happening very much क्योंकि टाइम ही नहीं है. And now our goal has become early retirement. Make money while we sleep. We don't want to rent our time for money. These are the goals that we have. Because then we will have time to enjoy the things that we want. And to fulfill those dreams, we all know that we either have to start a business or we will have to invest in businesses and make good returns.
And as I already discussed थोड़ी देर पहले कि government is the godfather of market. So if we understand how the godfather is thinking, we can make good bets, correct bets. The probability would be more. So you guys can connect the dots here. Number 2, dangerous. There is a quote from Plato. It says, the price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. I'm not saying currently we are being ruled by evil men, but that is only because some good guys, well-educated guys, they fought for our freedom and they have made a constitution such that it does not provide our government the right to be evil. But if you see, just before that, Britishers, they were evil. And in today's world, when I'm saying dangerous, I'm not talking about life-threatening dangerous. I'm not saying that Hitler जैसा मामला हो जाएगा कुछ. It's not life-threatening dangerous, but current danger would be कि what if a stupid guy is ruling us? It's happening around the world. US में ट्रम्प आ गया, ब्रेक्सिट हुआ, things that are happening in Pakistan. Putin is debatable if it's foolish or not. So, current danger is that we don't want to be ruled by inferior men. जिस बंदे के लिए या फिर जिस बंदी के लिए you don't even care कि मैं इसके against वोट करूं या फिर इसके फेवर में वोट करूं, that person will be ruling you. And that person will be making decisions that will impact your current life and your future. And if that person is incompetent, that is dangerous to us. And if you see in the history of the world, democracy, it's a very recent phenomena. And we don't really know when it will topple. Even in today's world, in 21st century, this whole world is not a democracy. So we millennials have the responsibility to be more aware about it. हम इस country के citizens हैं और हमारे constitution ने हमें कुछ rights दिए हैं और कुछ responsibilities दी हैं. Responsibilities भी हमें लेनी चाहिए. हम rights को तो अच्छे से enjoy कर रहे हैं. We are living a good life, but we should become a responsible citizen now as well. हमें ये लगता है कि यार हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, I'm just a single vote, और इंडिया इतना बड़ा है और हमारे जैसा माइंडसेट रखने वाला जो एक सेगमेंट है वो बहुत छोटा है, तो our vote does not really matter and we see it in government policies as well. But I would like to give you one or two arguments to say कि कैसे हम हमारा potential इससे बहुत ज़्यादा है. First thing is कि we are a collective. We all urban millennials and Gen Zs, we have a similar mindset. So there is a potential if we all get involved in political discussions, in political discourse, then we will reach sort of similar expectations from our government or our policy makers. And when there is a collective and a collective talks about some issues, then it is heard by the politicians because it is their job, because a collective will shape the narrative. The latest example of Kisan Andolan, it is a very good example. We can learn from there कि they became a collective, उन्होंने अपनी demands रखी. I'm not saying कि we will be protesting, but you can see that if we form a collective, our voice will be heard. Number 2, we are very influential in our local circle of people that we know, and in our immediate family, so this is very prominent. All of us have family members back home in our tier 1 cities or our villages. At least 5 people, 5 लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों को हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं.
तो हम एक वोट नहीं है, हम 6 तो मिनिमम है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू फर्स्ट अप्लाई आवर एनालिटिक स्किल्स जो हम कूपन्स लेने में लगाते हैं या फिर कैशबैक्स के लिए लगाते हैं या फिर अपने ट्रैवल को प्लान करने के लिए लगाते हैं. सो ब्यूटिफुली इट शुड बी डन. आई एम नॉट सेइंग इट शुड नॉट बी डन. आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल दिस एनालिटिकल स्किल्स इफ वी पुट इन अंडरस्टैंडिंग द political scenario of our country and the future of this country, then we will make informed decisions. And if we propagate these opinions to our loved ones and the people over whom we have influence, it will be a very big thing. Now I'm urging you guys for at least voting in this election. Go home and cast your vote. It does not matter if you know the person or not, the candidates, you know the candidates or not. अपने चाचा ताऊ मामा किसी से भी पूछ लो या फिर नोटा में डाल दो. It does not really matter. But just the act of going there, putting in that effort, it will be a symbol in your mind that okay, now I have to start educating myself about politics and elections in general. And then by 2029 I'm hopeful that we will all be informed voters. और मैं इस जर्नी में आपके साथ रहूँगा. अभी ये मेरी पहली वीडियो है, मैं रेलेवेंट कंटेंट इस तरीके का बनाता रहूँगा. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो इसको लाइक कर दो. और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक या फिर कोई स्पेशल टॉपिक है विच यू गाइज वॉन्ट मी टू डिस्कस, वो कमेंट में बता दो. कमेंट में फीडबैक होगा तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है. आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग. आप लोगों के लिए ही मैं ये बना रहा हूँ. सो या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.